Everyone, today we are going to discuss basically Schwann cells and Mylein sheath. ठीक है तो basically we have discussed the main can say most common we can say structure of neuron in the previous video. We are just going to discuss Schwann cells and Mylein sheath in this video. So first of all we can say as I told in the previous center we have one CNS and we have PNS. ठीक है So remember in the CNS the myelin sheet is basically जो myelin sheet है is made up of different type of protein in both. मतलब in the CNS myelin sheet is made by something else and in the PNS myelin sheet is made by something else. So if I can tell you, so in the in the CNS, the myelin sheet is basically made up of one type of cells which are mm, oligodendrocytes. Oligodendrocytes. And if I can tell you, in the PNS, the myelin sheet is basically made up of. It is made up of. Yes, it is basically made up of Schwann cells. Schwann cells. Okay. So another thing, if I can tell you here, wait a second. Yep. So first of all, here we have one neuron. Again, if I can make a neuron, okay. So this is I have one neuron. So now here you can see in the neuron we have myelin sheet is present. Okay, myelin sheet. Now the here question can be asked like in the now see we have two type of neuron. One we have myelinated neuron and other is non-myelinated neuron. Myelinated neuron in which myelin sheet is present and non-myelinated neuron in which myelin sheet is not present. So therefore here I have drawn the neuron in which myelin sheet is present. So in this the PNS signals will be high. इसके अंदर पीएनएस के जो सिग्नल्स होंगे ना वो ज़्यादा स्पीड के अंदर जाएंगे as compared to non-myelinated के अंदर. So this question can be asked in the myelinated or in the non-myelinated in which type of neuron the signals of PNS have more speed. So your answer should be myelinated neuron. Okay? Because why is it so? Mm, second, yes. Because here in the myelinated neuron, here in this the place where we can say myelinated sheet is not present and that place is known as depolarization. इस place के अंदर क्या होती है, इस place के अंदर depolarization नहीं होती है. ठीक है, तो depolarization नहीं होती है मतलब यहाँ पे हमारे पास myelin sheet नहीं होती है depolarization. Okay, तो here you can see यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास सिग्नल्स है ना वो जंप करके जाते हैं वन मैरिनेटेड टू अनदर प्लेस फिर दूसरी प्लेट के अंदर क्योंकि जहाँ ये माइलिन शीट प्रेजेंट है वहाँ डीपोलराइजेशन नहीं होती एंड अब आगे जाके हम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है वहाँ पर पीएनएस के सिग्नल्स जाते हैं तो इफ माइलिन शीट इज प्रेजेंट दिस मीन्स द पीएनएस सिग्नल कैन नॉट मूव थ्रू दिस पाथ जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है इसका मतलब कि पीएनएस के सिग्नल्स वहाँ से नहीं मूव कर सकते to the place where myelinated sheet is not present यहाँ पर so from here it will jump the signal will jump from one part to another except the myelinated sheet. Okay, so this the jumping of basically signals is known as. अब मुझे आप बताओ जो jumping हो रही है signals की इसको हम क्या कहते हैं. So yeah, basically the jumping of signal is known as solitary conduction. Solitary conduction, which we'll discuss later on with the whole graph. But here, in which in the myelinated neuron, which myelin sheet is present, in that the jumping of signal is present, that is known as solitary conduction. Three conductions. Okay. One more thing, if I can tell you here.
So yes, um, uh, let me tell you. Yeah. So here you can see we have CNS and PNS. So in the CNS, basically, when the bodies of neuron combine together, जब किसी भी न्यूरॉन की क्या होती है जब bodies combine होती हैं, I'm talking about CNS, जहाँ पे cell bodies combine होती हैं, this means the cluster of cell bodies is present that is known as nuclei. उस जगह को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियाई कहते हैं इन द सीएनएस मैं सीएनएस की बात कर रही हूँ जहाँ पर क्या होता है न्यूरॉन बॉडी का क्या हो हमारे पास क्लस्टर हो एक गुच्छा हो सो दैट इज नोन एज न्यूक्लियाई उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियाई ठीक है अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है अगर हम बात करें पीएनएस के अंदर तो बेसिकली इन द पीएनएस के अंदर क्या होता है जो सेल बॉडीज का जो गुच्छा होता है क्लस्टर होता है दैट इज नोन एज गैंग्लियन दैट इज नोन एज गैंग्लियन उसको हम क्या कहते हैं गैंग्लियन तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर सीएनएस के अंदर न्यूरॉन के क्लस्टर को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं इन द पीएनएस द क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियन इज नोन एज गैंग्लियन ठीक है वन मोर थिंग बेसिकली इन द सीएनएस द क्लस्टर ऑफ एक्सोन जो एक्सोन का जो गुच्छा होता है द क्लस्टर ऑफ एक्सोन दैट इज बेसिकली नोन एज नर्व मतलब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एक्सोन्स नॉट नर्व सॉरी ट्रैक्ट ठीक है उसको हम क्या कहते हैं ट्रैक्ट जब एक्सोन का क्लस्टर हो किसके अंदर सीएनएस के अंदर उसको हम कहते हैं ट्रैक्ट नोन एज ट्रैक्ट अगर हम बात करें द सेम द क्लस्टर ऑफ पीएन क्लस्टर ऑफ एक्सोन किसके अंदर पीएनएस के अंदर इफ द क्लस्टर ऑफ एक्सोन इन द पीएनएस सो दैट इज नोन एज उस जगह को हम क्या कहते हैं नर्व उसको हम कहते हैं नर्व ठीक है सो क्लस्टर ऑफ basically axon in CNS is known as tract the cluster of axon in PNS known as nerve so these are the most important things which you have to remember I hope today's lecture is more interesting for you and clear and tomorrow we are going to start basic topic central nervous system and peripheral in detail basically their location nerve sensory motor so till that bye bye